शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि Charanam Sharanam Gachami. Before we begin the class today, we'll be welcoming Paramji by doing three Paramnads. Mm. 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 I'd like to begin the class today by introducing myself. I am Shraddha Sharma, Bharti Sharma ji's elder son, and I have been doing P3Y for the past many years. And with the blessings of Paramji, I have had many of my wishes fulfilled. And by qualification, I am a postgraduate and I am working as an editor in a company in Gurugram. And Paramji has been kind enough to bless me with a happy life in terms of a happy married life, happy family life, happy career, good career, soothing and nurturing work environment. So every ways, Paramji has been kind enough to bless me with all the goods in the life and has reduced the negatives to the minimum. And it is to the extent that I currently do not feel the effect of anything negative around me. It is just that with the blessings of Paramji, the happy things have been amplified and the negative things have been nullified. So I would like to tell you people about the scientific system of P3Y that Paramji established for the benefit of people like us, which is so people like us who can continue to follow their spiritual gurus, continue to follow their spiritual beliefs, and whatever religious background we people are from, we can continue to have faith in that. And along with that, we can do P3Y, we can follow the scientific system of P3Y to get our wishes fulfilled. What kind of wishes are fulfilled in the system of P3Y? Those are the one that have, in spite of putting in all our efforts, we have not been able to get the desired outcome. So for those kind of wishes are fulfilled in the system of P3Y, provided though the wishes that we ask for, those are beneficial for us and do not cause harm to anybody else. So if the wishes are of that nature and we speak and ask for those in the correct format in the system of P3Y, Paramji grants us those wishes. Now, what is P3Y and what all does it include? I'll be telling you about that. Before that, I just happened to have this piece of paper with me, and this is a invitation for video P3Y online class. There is some content that is written here, and this is the reason behind me reading it out loud for you. I'll tell you a little later. Let me just quickly tell it what it is written.
P3Y is a way of life enriched with the supernatural powers of Paramji Elias's holiness. One can continue to stick to his or her religious or cultural beliefs and simultaneously do P3Y to reap benefits such as financial growth in job or business, get any desires fulfilled which were otherwise unaccomplished or unfulfilled. P3Y does not restrict any eating or drinking habits. Doing P3Y brings peace and harmony in family life, helps in financial growth, improves retention power, improves IQ and concentration level of students, lowers tension, and offers a body free from physical and mental illness. P3Y safeguards us from the ill effects of planetary positions, keeps us away from negativity, and brings us closer to God, leading us toward the ultimate path of moksha. Doing P3Y not only helps the jobless secure good employment opportunities, but also helps the employed get increment, promotion, transfer, etc. P3Y also offers marital and maternal bliss as well as can be done to find lost or stolen items, recover bad debts, and turn loss making businesses into profitable ventures. It helps in de addiction from substances such as alcohol and cigarettes. Doing P3Y does not require any sort of devotion, trust, or belief. All it needs is the right guidance from a P3Y teacher. So, this is all written on this paper, and this is the reason behind me telling you and reading this out for you is this will help in you telling to others as to why should somebody who is in need should do P3Y and what kind of benefits will they be getting, for what kind of problems can they do P3Y, and what are the benefits that the system of P3Y can offer. This is just a brief, and there are many other areas that have not been listed here, but still the system of P3Y works for our benefit. Now, coming to what P3Y stands for. P3Y is made up of three P's and one Y. The first is Paramji, the second is Papra. It is a set of 11 sentences which have to be spoken in a specific order to get our desires fulfilled. The wish that we have, those wishes have to be spoken in a specific format to get them fulfilled. The third P is Param and Y is Yog. Param Yog. These two combine together, and this is one simple process of taking in air and exhaling it out. But that has to be done in a specific posture of the body so that we get maximum positive energy from the simple process of Param Yoga. It helps us calm down our nerves, it helps us channelize our energy properly, it helps us focus more. And anybody who has any mind related or brain related issues, probably not the issues, developmental concerns that are there in a person since birth, but any other issues or ailments that have cropped up post birth, for that and to nullify or lower the effects of those problems, Param Yoga helps a lot. So I'll tell you what P1 Paramji is. This is the universally accepted photograph of Paramji. Paramji is no Guru, Swami, Maharaj, or Bhagwan. As you cannot see electricity with your naked eye, but you can see the function of electricity, which is when you switch on a bulb, you see the bulb emitting light. When you switch on a tube light, you see the tube light emitting light again in the room and illuminating it. You switch on a fan,
you see that rotating and it circulates air within the room. So the way you cannot see electricity with your naked eye, but you can see the effects of it, the functions of it. In a similar manner, you cannot see the powers of Paramji with your eye. You cannot feel that. But what you can feel is through the system of P3Y, the powers of Paramji, they work for our benefit. And the desires that have not been accomplished, have not been fulfilled yet, if we speak those in the order of P2 Papr, if we speak those desires in this order, then Paramji's powers work for our benefit and we can get our desires fulfilled. So this is a scientific process that Paramji established, and this is does not require any affiliation or any association with any other religious group, or you do not people from any other religious background, be it Hindu, Sikh, Muslim, Isai, any other religious background, any background, any financial background, any social background, any religious background can get associated with the system of P3Y and gain benefit from it. The system of P3Y does not require any vrat, upavas, puja, path, havan, bhajan, kirtan, repeated chanting of mantras. There is no such requirement of any such thing in the system of P3Y since it is a scientific process. You speak your desire in a specific format just once for your desire, and then you do not have to chant it again. It is no mantra that you have to chant repeatedly. It is a scientific process. You feed in your desire and you wait for your desire to get fulfilled. Now, moving on to P2 Papr, the format in which you have to speak your desire. What is that? This is a set of 11 sentences. I will tell you what these 11 sentences are. I'll begin with the first. Paramam Sharanam Gachami, Hansam Sharanam Gachami, Advaitam Sharanam Gachami, Anandam Sharanam Gachami, Charanam Sharanam Gachami. हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ. These are the first 8 sentences out of the 11 sentences. Once you speak these 8 sentences in this order, then you need to bow down and welcome Paramji. Once you welcome Paramji, you will have established a virtual connection with Paramji. These 8 sentences have to be spoken as is across the world. Any language you speak, in that language, these words, these set of sentences will remain the same. There will be no alteration, no variation, no change. You cannot jumble the order of these sentences. These sentences will have to be spoken in this specific order and in the correct pronunciation that I just spoke them in. Once you speak these sentences in this order, after speaking the 8 sentences, you need to speak your desire in the ninth sentence. Whatever your desire is. If it is something related to probably the health of your child, or for example, my daughter will be starting to going to school from tomorrow. I am a little concerned about the coronavirus thing going around. So I can ask for Paramji's blessings that Paramji bless my daughter, say that since she is going to school from tomorrow, she is healthy, she stays healthy, she does not get affected by any other viruses around due to change in weather. She does not get affected, she does not fall ill. She enjoys going to school and learns the most in that environment. She becomes obedient and disciplined, and there are no bad effects of her going to school. So, this is a simple desire related to my daughter going to school. This is an example. Once I speak that in the ninth sentence, then we move on to the 10th and the 11th sentences. The 10th is, as soon as my desire is fulfilled in Pakar, I will pay
1 rupee to Paramji. The 11th sentence is, as soon as my desire is fulfilled in Pakar, I will tell to one new person about the system of P3Y. Now, the number you commit to pay in the 10th sentence and the number you commit to tell in the 11th sentence, these will change depending on the desire you speak in the ninth one. The bigger and the more important that desire is for you, the higher will be the numbers you commit in the 10th and the 11th sentences. So this was just an example. What if I went out somewhere, I went to the market on my scooty and I had my phone in my pocket. Somewhere I did not notice, but the when I noticed, then the phone is no longer in my pocket. It means that I have dropped it somewhere. Now the phone generally cost like 60-70,000 rupees, and with the blessings of Paramji, if P3Y is done right at the instant that itself, then there are higher chances of you trying to locate it successfully and retrieving it. But if for such a desire of you, in spite of having lost your phone, and if you are wanting to go back and search for it, and if you want to get it back, so for a phone that costs you 60-70,000 rupees or a lakh rupees, if you commit to pay 10 rupees to Paramji in the 10th sentence, and if you commit to tell to one new person about the system of P3Y in the 11th sentence, so Paramji will not be granting you your desire, because a person who has already lost a phone worth rupees 60,000 or 70,000, and if that person goes to the market and wants to buy a new phone, if it is the same phone that the person is buying, he will again have to spend 60,000 or 70,000 rupees. And if you even choose to buy a comparatively cheaper phone, you will be shelling out somewhere in the range of 30,000 to 40,000 rupees. So if you go to buy a new phone of 30,000 to 40,000 rupees, you are okay spending that much amount. But you are not okay deciding a higher amount that you will have to only commit to pay to Paramji at the time you are speaking your desire. And only once your desire is fulfilled, only after you are able to successfully get your handset back, you are able to retrieve it, only then will you have to fulfill those commitments. Then why not make some decent commitments in the 10th and the 11th sentences, so that you do not have to go through the trouble of lodging a police complaint, getting a new SIM card issued, going to the market and buying a new phone, configuring it again, and then using it. In spite, apart from instead of doing all of this, you can simply do P3Y right then and there in that moment itself, and then try to locate your phone. There will be higher chances of you getting it. Now here, time is the key. If you choose to wait for a day or two, and then you think of doing P3Y, and then you wish to go back and look for it, in that case, Param, even if you commit to pay like all 70,000 rupees, the worth of your old phone, then also, why should Paramji invest his powers in fulfilling the desire of a person who willingly chose to ignore the system and follow it at the time it should have been done? Instead, the person chose to wait for a day or two and then tried to test Paramji's powers. So then, Paramji, why should Paramji do it? And why should Paramji do it for a person who is not willing to actually commit the right numbers here in the 10th and the 11th sentence? So instead of letting your mind play and then try to reason with yourself or negotiate the numbers within your mind and then
try to commit lesser amount, you can commit a suitable amount that would yield better results. So it is you who will have to decide the numbers here, but you yourself will have to finalize this. And Paramji is not to be blamed if you, for the lack of a better word, try to act smart, because Paramji is here to grant you your wish, provided you fulfill the requirements of the system. And these are only the commitments that you are making at the moment you are speaking these 11 sentences. So there is no cheating in the system of P3Y, because you will have to fulfill these commitments only after your desire is fulfilled. So try to follow this simple system of P3Y and get your wishes fulfilled. With this, now I'll be stepping aside and Bhartima will be taking over. Charnam Charnam Gachami. शरणम शरणम गच्छामि। सर्वप्रथम परम जी का स्वागत। और अब जो भी ऑनलाइन परम धाम 1337 सेक्टर 19 फरीदाबाद हरियाणा से यह क्लास अटेंड कर रहे हैं, सभी का मैं भारती शर्मा स्वागत करती हूँ। अब क्योंकि इस क्लास में आप परमनाथ श्रीदत्त शर्मा के साथ कर चुके हैं, लेकिन मेरा अपना एक नियम है, जो भी काम करती हूँ परम जी के आदेश के अनुसार परम योग करके ही करती हूँ। तो आज भी 3 परमनाथ क्षणम क्षणम गच्छामि। तो अभी आपने श्रीदत्त शर्मा जी से लगभग आज के नए व्यक्ति के लिए क्लास P3Y क्या है, P3Y में हम कैसे कर सकते हैं, वो सब आपने सीखा है। और मैं जो अब आज के क्लास में आगे सिर्फ एक छोटा सा जो आज सुबह हमने P3Y लक्ष्मी समृद्धि अनुसंधान हमने किया, मैं सिर्फ उसका एक छोटा सा आपको अनुभव बताना चाहती हूँ। बहुत सुंदर तरीके से चैट में लिखा था, जिन्होंने भी क्लास अटेंड की P3Y लक्ष्मी समृद्धि अनुसंधान गूगल मीट क्लास चैट में लिखा था अनुभव। वैसे तो 2-3 अनुभव थे, मैं सिर्फ एक ही बताऊंगी, बाकी 2 कल। तो बहुत सुंदर तरीके से साधना जी ने जो फरीदाबाद में ही रहती हैं, उन्होंने लिखा था कि उनके 8 से 10 रूम रेंट पर थे जो खाली हो गए। कई महीनों से कोई किराएदार नहीं आया था। लास्ट जो पिछले महीने जो उन्होंने P3Y लक्ष्मी समृद्धि अनुसंधान क्लास अटेंड की और उसमें जो सीखा उन्होंने वही किया, तो विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर ही उनके वो सारे रूम्स किराएदार से भर गए। अर्थात 1 वीक में ही उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। तो इच्छा पूर्ण होती है 11 वाक्य से, इसमें 2 राय नहीं है। लेकिन अनुसंधान क्या है? हमारे P3Y से परम जी के द्वारा जो हमें शक्ति मिल रही है, उस शक्ति को और बढ़ाती है। तो बहुत सुंदर लगा। साधना जी, आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई, ये कितना सुंदर आपने लाभ लिया। तो ऐसे ही जिन्होंने भी आज सुबह 11 बजे P3Y क्लास में लक्ष्मी समृद्धि पप्र किया और अपने आने वाले सप्ताह को और सुंदर बनाया, अति उत्तम। बरकतकार रिचार्ज कराया, अति उत्तम। लेकिन किसी कारणवश यदि लाइव में नहीं कर पाए तो अभी हम कर लेते हैं। और इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं लक्ष्मी समृद्धि पप्र ही आपको कराऊंगी, लेकिन ये है कि आज आपने लक्ष्मी समृद्धि पप्र और बहुत सुंदर
अनुभव दिन भर में चलते रहे कि आज अनुसंधान भी आज हमने किया, फिर बहुत सुंदर-सुंदर कुछ लोग परम धाम में आकर के अपना अनुभव भी प्रैक्टिकल यहाँ आकर के फिज़िकली आकर के सुनाया, बहुत अच्छा लगा। यानी कुल मिलाकर के आज का दिन सारा आमदनी, लक्ष्मी और धन्यवाद इन सब में ही निकला, अच्छा लगा। तो आपको क्या अच्छा लगा? आपने P3Y किया, आपको P3Y से क्या अनुभव आया? तो आपने जिन्होंने भी P3Y लक्ष्मी समृद्धि अनुसंधान किया, उसका अनुभव या P3Y रोग निवारण अनुसंधान किया तो उसका अनुभव आपको क्या मिला? आप अगली स्टेज पर जा रहे हैं, तो पिछली स्टेज में, पिछली क्लास में आपका क्या अनुभव रहा? आप ज़रूर से अपना अनुभव लिखकर ऑडियो वीडियो से ज़रूर भेजिएगा। जिससे आपको आने वाला माह और ज़्यादा लाभकारी रहे, पावरफुल रहे। ठीक है? तो चलिए अब 3 परमनाद करेंगे और आज की क्लास का लाभ लेंगे। हम्म, हम्म, हम्म। बोलिए परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। से झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार परम जी। परम जी, आज शाम 7 बजे की इस P3Y क्लास में अपनी शक्ति दो। आज की इस क्लास में मेरी विशेष इच्छा है। अब जिसकी जो इच्छा है मन ही मन अपनी इच्छा बोल दीजिए। मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। इच्छा पूर्ति तक नियमित परम योग करने से हमारा मनोबल बढ़े, धैर्य बढ़े। सभी सावधानी रखते हुए कोरोना वायरस से, मानसिक शारीरिक रोगों से, दुर्घटनाओं से, विरोधियों से सुरक्षा बनी रहे। मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अब मन ही मन भेंट राशि स्वयं से निश्चित करें। परम जी को दूंगी। 1 लीटर जल चढ़ाऊंगी, 1 पुष्प चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। शरणम शरणम गच्छामि। तो अभी हमने आज की क्लास का लाभ लिया और अब अगला लाभ लेंगे पीने का जल भोज भेंट। जिसको जो भी सिद्ध करना है लीजिएगा। बरकत कार्ड सुबह करा दिए थे, फिर करो। सुबह सबने बरकत कार्ड रिचार्ज कर ही लिए हैं। किसी का रहा है तो लिखिएगा, बाकी पर हो गया है तो अब पीने का जल भोज भेंट हाथ लगाइएगा या देखते रहें। क्षणम क्षणम गच्छामि।
तो इस जल में परम जी ने शक्ति दी, इस जल का प्रयोग करेंगे और इस जल भोज भेंट का प्रयोग करने से हम भी स्वयं सुखी स्वस्थ और परिवार को भी सुखी स्वस्थ करेंगे। चलिए, तो अब अगला लाभ लेंगे प्रार्थना के द्वारा। लीजिएगा। चरणम शरणम गच्छामि। आज की क्लास में रिंकल वर्मा जी का अनुभव है। उन्होंने लिखा है, परम जी की कृपा से आज मैं अपने पति के साथ रहने के लिए आ गई हूँ जहाँ वो रहते हैं। थैंक यू परम जी, थैंक यू भारती माँ। आज की क्लास में प्रार्थना है संगीता के नाम से प्रार्थना, प्रतिभा चौधरी एंड फैमिली के लिए प्रार्थना, अंजलि अपने पापा की नौकरी के लिए प्रार्थना, मम्मी के लिए प्रार्थना, अंजलि स्वयं के लिए प्रार्थना, मेरा मन पढ़ाई में अधिकतम लगे उस। कमलप्रीत कौर फैमिली के लिए प्रार्थना, गौरव वर्मा के लिए प्रार्थना, अमृता की छोटी बेटी के लिए प्रार्थना, अर्चना झा माँ सीटेट का रिजल्ट के लिए प्रार्थना, अच्छे मार्क्स आए उसके लिए प्रार्थना। कविता चौधरी, मेरे पति की दुकान में आमदनी बढ़े, फिजूल खर्ची कम हो, इसके लिए प्रार्थना। आयुष राज, आदर्श राज, पढ़ाई के लिए प्रार्थना। तो लगभग सब प्रार्थना बोल दी है। तो सब प्रार्थना हम अर्पण करेंगे और साथ में एक सूचना दे देती हूँ कि कल रात्रि 9 बजे पंजाबी क्षेत्रीय भाषा P3Y क्लास है और जिसमें जो होस्ट हैं कमलजीत कौर, उनकी इच्छा है कि उन्हें सरकारी नौकरी की तैयारी करके उन्हें सरकारी नौकरी अर्थात गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कि उसमें P3Y कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उनकी वो इच्छा है। उसी इच्छा की पूर्ति के लिए वो सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं। सिखा रही है P3Y, सीख रही हैं कैसे प्रयोग करें। ठीक है, तो जिनको भी अटेंड करना हो रात्रि 9 बजे गूगल मीट क्लास जरूर अटेंड करेंगे। अटेंड करने के लिए यदि क्लास लिंक लेने के लिए तो हमारे व्हाट्सएप पर होना आपको जरूरी है। तो नए व्यक्ति हों तो आप हमारे P3Y NCR फैमिली ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, अब जिन्होंने भी प्रार्थना की सभी की प्रार्थना हम परम जी को अर्पण करेंगे। शरणम शरणम गच्छामि। परम से निवेदन, जिन्होंने प्रार्थना की, जिस भी इच्छा से प्रार्थना की, सभी की इच्छा पूर्ण हो, संकट समस्या दूर हो, स्वास्थ्य बढ़े, समृद्धि बढ़े, सभी को परम जी का आशीर्वाद। शरणम शरणम गच्छामि। चलिए, तो अब अगला लाभ लेंगे सुरक्षा जल के द्वारा। तो लीजिएगा जल और जल में देखते रहें। क्षणम क्षणम गच्छामि। तो इस जल में परम जी ने शक्ति दी, इस जल का प्रयोग करेंगे छिड़कने में। इस जल को छिड़कने से नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, नजर टोक ग्रह दोष वास्तु दोष जैसे दोषों का निवारण होता है। इस जल को छिड़कने से सुखद अनुभव होते हैं। तो बस अच्छा सच्चा अनुभव याद कीजिएगा, अन्य को बताइएगा, सुखद सुंदर शक्ति लीजिएगा।
तो बस अब इसके साथ ही क्लास समापन में 3 परमनाद करके परम जी का धन्यवाद करेंगे। हम्म, हम्म, हम्म। बोलिए थैंक यू परम जी, थैंक यू परम जी, थैंक यू परम जी। हे परम जी, अपनी ऐसी ही कृपा, अपना ऐसा ही आशीर्वाद भविष्य में भी मुझ पर, मेरे परिवार पर, हमारे काम पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी सद्बुद्धि पर बनाए रखना। चरणम शरणम गच्छामि। परम से निवेदन, आज की रात्रि, कल का आने वाला दिन खूब सुखकारी रहे। चरणम शरणम।